Hi students, how are you? A very warm welcome to you all to 12th standard. So today in this video lecture I am going to start with first chapter of 12th, that is solid state. In states of matter in 11th standard we have studied various properties of gaseous state and some properties of liquid state also. In this chapter, we are going to study all about all the properties of solids, electrical properties, magnetic property, other general properties of solid state. Then solid state का classification हम लोग study करेंगे. We'll study the structure of solid state, various structures of solid state, and also we will be studying its defects in solid state. So let's start with it. Now, solid state. What are the general properties of solid state? So school से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. What are the general property? What are the general property? They have definite mass, volume, and shape. The intermolecular distance means distance between two molecules is very, very less. Intermolecular force is very strong. They have high density of atoms. Then they have less kinetic energy, negligible kinetic energy. They are incompressible. So these are the properties, general properties of solid state. हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? Now we'll do the types of solids. So solids के दो types हैं, crystalline and amorphous. Solids has been classified into two, crystalline and amorphous, depending on the arrangement of atoms. Arrangement of atoms पे depending उसके basis पे हम लोग ने solids को crystalline and amorphous में classify किया है. Now let's study each type in detail. So first we'll start with crystalline solid. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एटम्स का अरेंजमेंट यहाँ पे पिक्चर में मैंने दिखाया है. सो क्या समझ में आ रहा है ड्राइंग से, डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है? एटम्स जो है यहाँ पे, एटम्स आर रेगुलरली अरेंज्ड. एटम्स ऑफ crystalline solid have regular arrangement. You can see कैसा है, एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट है ना? सबका सेम अरेंजमेंट है. They have definite geometrical shape. They have definite
geometrical shape. They are long range order. They are long range order solids. अब long range order का मतलब क्या है? What do you mean? Now suppose if you see with microscope, ये crystalline solid को अगर तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे तो क्या पता चलेगा कि जहां तक भी तुम्हें दिख रहा है एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है? सेम है. इट इज सेम. So therefore they are known as long range order solid. उनके एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? लॉन्ग रेंज तक सेम है. So they are long range order solids. They have sharp melting point. मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? शार्प है. They are anisotropic in nature. You can see in this diagram, anisotropic in nature. So now सबसे पहले what do you mean by anisotropic? When direction changes, properties also changes. So for example, if you go in C and D direction, property, and if you go in A and B direction, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो प्रॉपर्टी भी क्या रहेगा? चेंज होगा. इन प्रॉपर्टी इन C and D direction and in A and B direction will be different. Okay, that is anisotropic nature. Now why properties are getting changed? Because if you see in C and D direction, atoms जो आ रहे हैं that are different. And if you see in A and B direction, atoms जो आ रहे हैं वो different है ना? तो atoms अगर change हो रहे हैं different direction में तो property भी क्या होगा? Change होगा. Now which property changes? For example, refractive index, electrical thermal conductivity. ये प्रॉपर्टी क्या होता है? चेंज होता है. Now if you cut crystalline solid, you will get sharp edge. Sharp edges are obtained on cutting with knife. अगर नाइफ से कट करेंगे तो सब्सटेंस के कैसे शार्प एज आते हैं. They are true solids. They are true solids. For example, क्या examples है? What are the example? Metals. Then you can take ionic salts, diamond, graphite, fullerene. These are crystalline solids. Okay. Now next is amorphous solid. Next is
amorphous solid. So now you can see here in the photo, amorphous solid कैसा है क्या कुछ पैटर्न इसका प्रॉपर? नहीं है. Atoms are irregularly, or you can say randomly arranged. Then they don't have definite geometry. They have indefinite geometrical shape. They are short range order. They are short range order solid. अब short range आने क्या? अभी suppose तुम इसको माइक्रोस्कोप में if you will see with microscope, तो ये थोड़े distance तक same arrangement show करता है and then arrangement gets changed. You can see here. ये देखो यहाँ पे same है, same, then it is getting changed. Again direction is getting changed. It is getting changed. तो you can see कि change जो है वो short distance पे अपने को दिखाई दे रहा है. So therefore it is short range order solid. Then it don't have sharp melting point. It don't have sharp melting point. It melts over the range of temperature. Then it is isotropic in nature. Isotropic का मतलब है different direction, same property. क्योंकि ये अरेंजमेंट ओरिएंटेड है ही नहीं ना, अरेंजमेंट ओरिएंटेड है ही नहीं, सो इसीलिए इसका प्रॉपर्टी पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है. इट इज इंडिपेंडेंट, प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन. ओके, देन दे आर ऑल्सो नोन एज सूडो सॉलिड. कैसा क्या है ये? सूडो सॉलिड, फॉल्स सॉलिड्स बोलते हैं इसको. Then if we cut with knife, edges are irregular. Edges produced are irregular. They are also known as super cooled liquid. जैसे glass, for example, glass at very high temperature is in liquid form. It flow like a liquid. It flow like a liquid. But at room temperature पे क्या होता है? It becomes solid. So प्रॉपर्टी जो रहेगा ग्लास का, जो अरेंजमेंट है एटम्स का, दैट इज नॉट रेगुलर, इट इज हाईली इरेगुलर. प्रॉपर्टीज आर आल्सो नॉट मैचिंग विथ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सो इट इज कमिंग अंडर amorphous solid. Then next property of amorphous solid is, इसके examples, we can add one more point. Example, you can take butter, glass, plastic, rubber, then cheese, gel. This all are pseudo solids. दिखने के लिए solids दिखते हैं, but इनका properties जो होता है, it is not matching with true solid. Okay.
Now, next we are going to do is classification of solids. So, crystalline solids are further classified into molecular solid, ionic solid, covalent solids, or you can say network solids, metallic crystalline solids. Now, molecular solids are being further classified as non-polar molecular solid, polar molecular solid, and hydrogen bonded molecular solids. Now, let's start with its property, study of its property. So now molecular solids में ऐसे solids आते हैं जिनका standard state is not solid but they are solidified to solid state. समझ में आ रहा है? Means उनका standard state is not a solid state. Standard state is not solid, but they are solidified. उनको क्या किया गया है? सॉलिडिफाई किया गया है टू सॉलिड्स. Now let's start with polar molecular solid. Now in polar molecular solid, the interaction which will be present between the molecules will be dipole-dipole interaction. It will be dipole-dipole interaction. Now dipole-dipole interaction is not as strong as hydrogen bonding. So ये जो solids होते हैं, ये होते हैं soft and they are non-conductor also, non-conductor of electricity. Okay. Now example, HCl, SO2. These are the example. Now HCl हो, SO2 हो, इसका natural standard state is not solid. It is a gaseous. ये gaseous में होते हैं, but when they are solidified and they are converted to solid state, so they come under polar molecular solids. Okay. Next is non-polar molecular solid. Now for non-polar molecular solid, the interaction which is present is London dispersion force. London dispersion force. और ये force एकदम weakest होता है. So ये solids कैसे है? Softest. They don't conduct electricity. For example, O2, H2, Cl2. So if you see methane, इनका natural state कैसा है? They are gaseous, but they are solidified to solid state. And when they are solidified, they come under non-polar molecular solids. Now, next is hydrogen bonded. Hydrogen bonded molecular solids. Now hydrogen bonded, name itself say यहाँ पे कौन सा interaction present है? Hydrogen bonding is present. Hydrogen bonding is the strongest intermolecular interaction. So ये कैसा होता है? Hard होता है. But it don't conduct electricity. It is a non-conductor. Now for example, you can take water,
अमोनिया, HF, ये जब भी सॉलिड स्टेट में आएंगे तो इट विल कम अंडर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर solids. Now if I want to compare the melting point of molecular solids, so सबसे strongest bond is present in hydrogen bonded, so इसका melting point सबसे ज्यादा है. Then it will be a polar molecular solid, and then it will be a non-polar molecular solid. Clear all of you? Next, let's start with ionic solid. Ionic solid. Now, ionic itself say there will be a presence of ions inside it. Charged ions are present. That is cation and anion. Ionic bond is present. Ionic bond is present. And ionic bond is the strongest bond. And therefore, they are hard and brittle. कैसे हैं इन लोग? Hard and brittle है. They have high melting point and boiling point. They don't conduct electricity in solid state. हाँ, but molten form में उन लोग conduct कर सकते हैं electricity. Then इसके examples क्या है? NaCl. They all are ionic solids. Okay. Next is metallic solid. Now metallic solid consists of number of free electrons. So हम लोग क्या बोलते हैं? Positive ion is surrounded by number of electrons. Positive ion of metal is surrounded, is submerged in sea of electron. Large number of free electrons are present in metallic solid. So you can see here, ये जो positive ion है और ये electron, ये दोनों एक दूसरे से bonded है, and this bond is metallic bond. Okay, so यहाँ पे जो bond present है, that is a metallic bond. Metallic bond कैसा है? Strong है. So metals कैसे होते हैं? Hard होते हैं. But hard होने के बावजूद they are ductile and malleable. So this is the property of metal. They conduct electricity. Conduct electricity. And they also produce luster. They also produced luster. अभी सॉलिड्स के अंदर ये इकलौता ऐसा सॉलिड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. बाकी सारे सॉलिड्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. एंड व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज देयर इज
number of free electrons are present. All metals are the example of metallic solids. Next is covalent solids. Now, for covalent solids, are present in giant 3D network of atoms. Giant 3D network of atoms. You can see यहाँ पे कैसे network में present है. This is diamond and this is graphite. So कैसे giant network में present है. Since they are present in giant network में है, तो कैसा है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, नेटवर्क इज वेरी स्ट्रॉन्ग. और कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड. स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन दिस नेटवर्क. इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि ये कैसे होते हैं, हार्डेस्ट होते हैं. दे आर दी हार्डेस्ट substance. Now for example, diamond कैसा है, हार्ड है ना. सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट इज डायमंड. दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3D नेटवर्क ऑफ एटम्स. नाउ बट इसमें एक्सेप्शनल भी है. ग्रेफाइट इज स्मॉल. क्यों ग्रेफाइट स्मॉल है, बिकॉज ग्रेफाइट इज प्रेजेंट इन द लेयर. दिस इज फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर. एंड ये लेयर्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कौन सा है, वैन डर वाल्स फोर्स है. सो इसीलिए ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है. सो दिस यू हैव स्टडीड इन डिटेल इन पी ब्लॉक. दे ऑल्सो don't conduct electricity. They are also non-conductors of electricity. They have highest, सब सॉलिड्स के अंदर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जिसका होता है वो कोवलेंट सॉलिड्स का होता है. हाँ, अभी ये नॉन कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, बट इसमें भी एक्सेप्शनल है कि ग्रेफाइट के अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. एंड डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, जिसके वजह से पाई बॉन्डिंग कैसा होता है, पाई इज वीक बॉन्डिंग. तो उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स, डायमंड, ग्रेफाइट, fullerene, etc. Okay, now for this video, this was my last topic. Apna I'm just stopping here and will continue this chapter in next video lecture. So till then, bye bye, take care. Yes, homework. Your homework is you will make proper notes of this topic, plus you will study this, whatever I have taught you, you will study this from NCERT. Clear all of you? चलो अभी मैं फाइनल बाय बाय करती हूँ तुम लोग को. बाय बाय.